Hi, so here I'm going to talk about one of the companies which I tweeted round about on 3rd of June. On today's 13th of June, so 10 दिन हो गए हैं. There has been some 1 week of 7 days trading sessions. So this is one of the companies, this analysis and what we can do and how we can trade, because the advantage and the disadvantage which we see with this particular company and this particular sector. And for me, I think maybe going forward for the third week of June, uh, I see auto might be a sector which can turn out to be a very good uh, sector to be in. And of course, I will do a sectorial analysis video today, and I am going to post it of the sector or sectors I would be tracking for the next week. But this video is about a particular company called Escorts, and it made a high of 1450 levels, and then it corrected, and it has been correcting since last few weeks now. And on 3rd of June I said that I will enter, and we are going to see how I took a momentum trade, and then it went towards 1230, and then it again came back. So you can see the multiple trades were taken on 4th of June, and then again on 11th of June. So I again booked out 1200. I again entered, and I booked out at 1234, and I said that 1239 is the breakout, and for any up move till then I am saying it's range bound. And I really like these range bound trades because these are sheer short trades which I can easily monitor, and where I can easily make money with a very low stop loss, right? And I not only I booked profit, I also created some shorts from 1230 onwards, and then I also created all the intra. I closed at 1209, and this was exactly the low which was made. So in this video I am going to talk about my targets and how I see it. So this is how the monthly chart looks like. Here you can see it went in the earlier 2018, and then there was a severe correction which came from 10,000 1000 levels. It corrected towards 500, so there was a drop. And again here we can see that there were some attempts made to cross 1500 levels, but it failed. And right now for the next last 2 months, it has last month was a very good closing, and this month also till now it's going really good. If you look for this daily chart, here we can see a very good target, and how I am going to look into how I find my trades is this one. So you can see it's a very near the upper range. Now the difference between this situation and this situation and this situation is, here when it corrects, when it touches, it gave a automatic a big red candle and it fell. Right here instead, and this was exactly the reason. This was on 3rd of June, exactly where I entered at 1200 levels, and I booked out. So this was the move which I was anticipating and I was waiting for. But unfortunately, as in market, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइसर, क्योंकि मार्केट है और कुछ भी हो सकती है. लेकिन इस बार मुझे जो डिफरेंट दिख रही है, एंड दिस इज़ a very tight consolidation which is happening in this zone, and this is the reason कि आज मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ. एंड आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन 13th of June ओवर द वीकेंड. सो आई एम गोइंग टू ट्रैक दिस फॉर द थर्ड वीक ऑफ जून, और मैं इसको जून जुलाई महीने में, एस्कॉर्ट्स इज़ वन ऑफ द गुड कंपनीज फॉर मी, और मैं इसमें रहना चाहता हूँ. सो दिस वॉज हाउ आई एनालाइज्ड इन द डेली चार्ट. नाउ लेट्स गो फॉर एन आवरली चार्ट. एन आवरली चार्ट यू कैन सी दैट इट्स एक्चुअली रेंज बाउंड, एंड दिस इज़ द रेंज विच आई हैव बीन प्लेइंग एज आई टोल्ड यू. ये एक रेंज है 1230 रीजन, और ये एक रेंज है 1200 रीजन. बस मस्त, ये दोनों रीजन में मैं इसको प्ले कर रहा हूँ. सो आई एम सो मैं इसी रेंज को प्ले कर रहा हूँ, and this is, I think it might very well consolidate more, and maybe if it dips around about 1170 and 1180 levels, so मैं उसी में उसमें भी मैं देखूंगा कि उसमें रिवर्सल आती है कि नहीं. and this is the reason I am putting a alert for me. Yeah, so no matter what, I think very soon ये जो 1239 levels, as I mentioned in my tweet earlier, आप जैसे देखे हो कि 1239 अगर ब्रेक करेगा, and if there is some breakout criteria which I do have, अगर वो मीट किए, I will tweet. बट अगर मैं ट्वीट नहीं करवाया फिर भी आप ट्रैक करो और देखो कि अगर आप किस तरह से
पोजीशन बना के पैसा कमा सकते हो। उसका शॉर्ट टर्म टारगेट्स और किस तरह से मैं देख रहा हूँ और उसमें कहाँ तक की मूवमेंट में देख रहा हूँ, दिस यू विल फाइंड इन द वीडियो आई क्रिएटेड ऑन 3rd of June, एंड वो मैं अपर राइट कॉर्नर में भी लगा दिया हूँ। वो 3rd of June की जो एनालिसिस है वो आज भी वैलिड है, सो आई वोंट बॉदर एंड डिस्कस इट मोर. One of the things I can say is this particular zone earlier into 2021 at the very start January February में वो heavily correct होके इस zone से इस zone में it got support, and then it went towards 1500 1460 levels, which was the all time high at that point of time. So ये जो move आई, you can see this happened very radically, and hence correction was due. इस रीजन में मैं सिप किया था पहले, और मैं इस रीजन का सिप अभी तक होल्ड कर रहा हूँ, बिकॉज फॉर मी आई हैव हेजिंग इन विच आई माई डाउन साइड इज़ ऑलवेज लिमिटेड, एंड आई वॉज एबल, मैं उसको पोस्ट भी किया था कि मैं किस तरह से 1400 का कॉल बेच के हेज कर रहा हूँ, और 1400 का फिर 1380 का कॉल बेच के मैं अपने पोजीशंस मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पोजीशंस कैश में है. सो मैं इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लॉट्स फ्यू ऑप्शंस में बेच के आई एम ऑलरेडी मेकिंग मनी. सो बट नाउ आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, and maybe going forward it will be able to take out this particular 1250 1240 region जो है, and once it's able to take out, then you see the move which comes in. यहाँ पे जब उसको सपोर्ट कंसोलिडेशन होगी, ये जो मूव मिलती है ये बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस मूव्स होती हैं. सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम क्रिएटिंग माई सिप एट दीज पर्टिकुलर लेवल्स, कि कल अगर कोई ब्रेकआउट आई, सो आई विड ऑलरेडी हैव बिग पोजिशंस ओवर हियर. यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेक किया था in the earlier instance, and after 2-3, this is on a weekly chart, after 2-3 weeks it was able to come out and make a new all-time high. This time it's much more consolidating, and ये बहुत ही अच्छी एक साइन है, क्योंकि अगर इसके बाद अगर ब्रेकआउट आएगी, so that will be a much more mature one compared to this erratic moves. And I think it's something like here you can see earlier, or here. So huge consolidation over weeks. This is on a week, and then a nice very well defined and very good move comes in. So this is something which I'm also expecting, just like over here also a very nice move came in from 1120 levels to 1420 levels. So that's like 20%. तो मैं एक बड़ा टारगेट देख रहा हूँ, and going forward I think I'm going to make a video on my view on the whole of this automotive sector. I don't say auto sector. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर कल ही भागेगी. आई एम नॉट सेइंग इट विल रन इन जून, बट आई थिंक ये सेक्टर जो है अभी मेरे लिए बहुत अच्छे सिप लेवल्स पे है, और मैं उसमें 3 कंपनीज़ में एक्सप्लिसिटली फोकस करके बैठा हूँ, एंड दिस विल कम एज अ डिफरेंट वीडियो. बट दिस इज़ ऑल अबाउट एस्कॉर्ट्स, बिकॉज मैंने 3rd जून को ये वीडियो दिया था. मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, जब भी पोजीशंस बुक करता हूँ, मैं उसमें एक्सप्लिसिटली बोल देता हूँ कि मैं देखो 4th of June को 1234 फ्रॉम हियर. सो वंस यू अंडरस्टैंड राइट, यहाँ पे अगर आप ये रीजन को देखो, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज सो कंफ्यूजिंग. या 1230 इज़ अ स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू लुक फॉर आवरली चार्ट, से फॉर एग्जांपल हियर, ये जब भी 1230 को गई थी, that was a big resistance zone, and so it corrected. फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे 1230 तक गई लास्ट सेशन में, एंड आई थिंक ये जो कल उसको जो मैं एक शॉर्ट क्रिएट किया था और उसके एग्जैक्ट लो 1209 में बनाई थी, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स क्लोज कर लिया अपना, जो मैं इस सेशन में बनाया था. और मैं 1209 इसलिए बोला था कि मुझे लगा था कि इस बार जो मूव आ रही है उसमें वो 1200 को टच नहीं करेगी, बट दैट मे नॉट बी ट्रू. मे बी इट विल गिव फॉल्स ब्रेकआउट, एंड इट विल अगेन ट्राई टू कंसोलिडेट इन दिस रेंज. नो मैटर व्हाट, आई एम मेकिंग माई पोजीशंस, and I will keep tweeting about Escorts, because this is on my radar, and especially for the month of July and August, I want to have my big fat position in Escorts. That's all for now. Hope this video was helpful, and लेट मी नो अगर आप इस पर ट्रेड कर रहे हो, आप अपना पोजीशंस बनाए हो, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, एंड व्हाट आर द लेवल्स यू आर थिंकिंग टू बुक आउट. अगर आपको मेरा व्यू पॉइंट चाहिए तो आप वो प्रीवियस वीडियो जो मैं 3rd of June को बनाया था, दिस माई ST टारगेट्स आर स्टिल वैलिड, एंड आई वुड बुक आउट ओवर देयर. सो डू हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो, वो आपको अपर राइट कॉर्नर में मिल जाएगी, एंड लेट मी नो. या थैंक्स अ लॉट, टाटा.